Greetings, dear learners. Today's program is for MA Economics students, MAEC, and those who have opted for project work, MECP 201, which is project work 1, and MECP 202, which is project work 2. MA Economics revised program is on offer since July 2023. The revised program is being offered in semester mode in 4 semesters of 20 credits each. However, the examination is conducted annually. In 4th semester, students have option to choose from 4 areas of specialization. Group A, Data Analytics. Group B, Energy and Environmental Economics. Group C, Insurance and Finance. And Group D, Social Policy. In all these 4 groups, one of the papers which is optional which students can take is project work. Either MECP 201, which is project work 1, and MECP 202, which is project work 2. Today's session is all about discussing project work. What is project work? Why is it important? Why are we offering it in MA Economics program? And also, what are the steps of conducting research and what are the different steps of preparing a project? We receive a lot of questions on how to select a topic, what are research objectives, how methodology should be written, what is the format for project proposal. We will deal with all such issues in today's session. So today's session is going to be very insightful for all of you. You have studied various theoretical papers like Microeconomics, MEC 101, Macroeconomics, MEC 102, and Quantitative Methods, Indian Economic Policy, which is MEC 205, and most importantly, MEC 109, which is on research methods in economics. In all these courses, you have understood various concepts related to theory and related to various aspects. In project work, we are giving you opportunity to apply these concepts that you have learned in these papers in solving real life problems. So what is project work? Why it is important? Let us discuss it with Professor Narayan Prasad sir, who is present with us. Sir. Thank you, Vijeta. Actually, as Vijeta has just told you, this program has been restructured in tune with the National Education Policy 2020. And the structure is like that: 4 semester, 20 credits each semester. All the 3 first, second and third semester, all courses are compulsory. Option starts only the 4th semester, and that too in a specialized. You have the option either to opt A group or B group, C group or D group. And each group, there is a provision of the project work. This project work again is of 100 marks in lieu of any written course. Now the important question arises: why this project work and what do we mean by the project? You might have heard a lot of things about the NEP 2020. The focus of the NEP 2020 is that rather than remembering this content, we have to understand the subject, and understanding is directly related to the application. Something you might have learned, so many things you might have learned in microeconomic analysis, MEC 101, MEC 102. These are the 2 basic building blocks of the whole economics subject. And another important dimension of this program is there are 2 primary tools, techniques. One is quantitative methods. Quantitative methods essentially include mathematics, particularly calculus, how to optimization, and then statistics also. These are basically the tools. Now, when you are quite aware of these tools and theory, then relating it to this is Indian Economic Policy course. And based on these foundational courses, 4 courses, how to do the research activity. This is basically MEC 109. Another area, growth and development, because how development takes place, what are the growth models,
Having the knowledge of these things and research methods, naturally a question arises, are these courses just for the sake of getting the degree, or do they have some linkage with the day-to-day life? If somebody completes a master degree program, is he employable? Is he worth to analyze the real life situation? Because in real life situation, there are various economic events and phenomena and situations when we expect a master degree holder to analyze the things. So in order to give that flavor of the subject, that flavor of the knowledge, the project work has been introduced at the master degree level. Whatever you have learned in theory, in tools and techniques and research methods, you have to apply it to analyze the real life situation. So this is the primary objective of the project work. Now there are various steps for the various stages. The first stage starts that the student should opt it, because you have to fill up the admission form in second year re-registration form, which courses you are opting from each, whatever group you have opted. The first stage is that. Second stage, once you have opted the project work, although in some areas, in some groups, project is compulsory, because 20 credits means including the project work. We are very shortly introduced some more courses in different groups, so that those students who are not interested to do the project work can have the option to opt other courses. But right now this option is not available, particularly in group A and group D. In group A and group B also. These are the two groups when necessarily to complete the 20 credit you have to opt the project work. So the first step is you have to opt it. Second step is you have to contact a supervisor. Now this is again a problematic area, because you might have been given you might have been attached with a study center. So please go to the coordinator and ask him for a project supervisor. In case the study center coordinator doesn't give you the name, or the person is not willing, we have also given the liberty to opt any other person who is not attached with the study center, but who is actively engaged in the teaching in any institution of higher learning at the college level teaching, or who is actively engaged in the research. Even the student who are doing the PhD and are actively engaged in some research institutions, you have the liberty to opt such a person as a supervisor. But in that case, you have to enclose the biodata of the particular person, so that you should not face any difficulty at the study center's end. Even then, if you are finding very, very difficult that you are not getting any supervisor, please send us the project proposal. Even directly, we are entertaining it. Now, because there are certain functions of the supervisor. He will introduce you the subject, he will give you the authority letter, because for that purpose you have to approach some institutions, some libraries, or some offices who deal with the data of that thing. So far as the supervisor is concerned, let us know it that there is a remuneration provision of 300 rupees project per supervision, and that money is dispersed or given by the regional center. They have to submit the bill to the regional center through their coordinator of the study center, and they will get the money. Now, second stage is that, before doing the project work, a student is expected at least two things. He should carefully go through the project guide, because in project guide every detail has been given: how to select the topic, how to identify a topic, how to frame the research questions, how to identify the objectives, and how to execute the project. All details, what are the nature of the sources, what are the sources of the data, what are the techniques of data analysis, everything have been given, or references have been given for particular regions. For example, data sources. You will get the all secondary sources data in the project guide. Their website details have been given. And if you are analyzing the data, different techniques, details, a tabular form has been given, which particular type of thing, what is the issue of analysis. Depending upon the issue of analysis, you can opt a particular
data analysis techniques, how to write the project report, how to give the references, how to give the citations. All details have been given in the project guide. Unfortunately, many of the students do not go through that project guide, and then they make the proposal in such a manner which is not approved here. Another important point you have to keep in mind is that there are two kinds of project. MECP 201, as Vijeta has already pointed out, there are certain groups where project credit is 4 credit. There are certain areas where project credit is 6 credit. So far, group A and group D, these are the two groups when the project credit is 202. Project 2 you have to opt, and their weightage is only 4 credits. Although while in the filling of the re-registration form, you might have been given 101 or 102, that code have been changed, so please correct it for yourself. Well, even while filling of the examination form, you have to mention either the code MECP 201 or MECP 202. If your group belong to group A or group D, you have to mention the project MECP 202. If your group is B or C, then you have to mention MECP 201 in both the cases. B and C यानी दोनों बीच के वो 201 है, और पहला और लास्ट वाला वो 202 है प्रोजेक्ट का जो कोड है. MECP 202 ग्रुप A and group D, MECP 201 group B and group C. So 6 that you have to carefully mention it, and please go through the project guide very carefully before taking any initiative towards the project work. So this is the basic things. Now I come to the various stages. Actually, the first stage is that general information. General information means there are various activities of the project work where you have to approach or to contact the different authorities. The first stage is that project proposal, formulation of the project proposal. To whom you have to address it? It is the program coordinator at the headquarter, IGNOU Maidangadi. That project proposal, you have to prepare it and send it to the program coordinator, School of Social Sciences, IGNOU Maidangadi, for project approval. This is the first stage. Second stage is that once the project has been approved, then you can start doing the project work. And the second stage, who is the crucial person? Crucial person is the supervisor. You have to work under the supervision of a supervisor. Any difficulty you face it, you consult it, and you can consult with your peer group, with other persons also while doing the project work. This is the second stage. The third stage, project evaluation. So project evaluation has necessarily to be sent to the registrar SED, Registrar Students Evaluation Division. And don't forget to enclose the project approval form. Project approval form along with the project report, you have to submit it to the registrar SED. Now many questions arise, what is the last date of the project submission? Actually, if you are intending to appear in the June term end examination, June 25, naturally, whatever the date of assignment submission is, that is the date of last date of submission of the project proposal, 31st March. But if you forget it, don't worry. We will entertain your project proposal at any time whenever you submit the proposal. But in that case, the result may little bit delayed, because evaluation division has also its own schedule of operations. So if you do not submit the project report by 31st May or so, then they will keep it pending for the next session. So submission of the project proposal date 31st March 2025, that date is already over. But even if we get it, we are trying to send reply to respond or to approve or whatever way by within a week. Within a week, your project proposal is examined at the faculty end and they will send the communication to you. Please note it that don't forget your mobile number and email on your project proposal. You have necessarily to mention it. Why? I will come a little bit later on this part. So there is a project
proposal particular form in the project guide which has been given. Project guide, both the project guides have been uploaded on the IGNOU website, this EMPC platform. You will go to the MEC menu, and then you will get the MECP 201, MECP 202. And the end of the project, there is a third column, annexers. So one annexer is the project proposal form. You have to give all the details required in that project proposal form and enclose your project proposal, and then you can send it to the program coordinator. After that, you can submit the project report directly to the registrar SED. They have their own mechanism. They send the project proposal report for the evaluation. The third very important point is that there is a 70% project evaluation marks and 30% there will be Viva. Viva Voshi will be through either through WhatsApp group, Google Meet, or various Google online Meet. platforms. Various options are there. Various online platforms can be used. But we will inform you through Google Meet that your Viva will be taken. A very serious important point, you have to note it down, that do not make any copying or do not buy any project proposal from the professional shops. If you will buy any project proposal from the professional shops, then necessarily in the Viva Voce, you will be caught red-handed. It is not possible for you that you copy from different sources. Then we will ensure that in project, and once we are of the opinion, or we found that you have copied it or you have purchased it from somewhere else, take it granted, you are going to be declared fail in that project report. So these were the cautious note, those who are involved in the project activity or doing the project work. So this is the basically preliminary information about the project work. Absolutely. Very important thing to note, we often receive questions from students regarding, like sir mentioned, that our code is MECP 101, but the program guide, project guide is not available. Please note that the code is MECP 201 and 202. It is available on egyankosh.ac.in. You can either type MEC in the search menu, or you can directly type MECP 201 or MECP 202. You will get access to the project guide. Like sir mentioned, it is extremely important to go through the project guide very carefully, in details. The project guide is prepared meticulously and its purpose is to help students in all the aspects. One more question that I often receive is how to design a project proposal. What is project proposal? So project proposal is just 5-6 page document which mentions some things, that what is your project? What is title of your project? What are the questions that you are addressing? What kind of data are you going to use in your project, in your research? What is your research methodology? What is the expected outcome? So we have mentioned these 6-7 things in our project guide. You have to go through it extremely carefully. Now, a very important question arises: how to choose right topic? How your proposal will get approved? What is that economics faculty look into the project proposal so that they approve or disapprove it? Sir, would you like to throw some light on it? Thank you. That's a very important topic. Actually, this is the topic when I am going to speak in detailed manner. Yes. Actually, MA के स्टूडेंट जब एक मेच्योरिटी स्टेज पर आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देखो, कोई भी ये बेसिकली प्रोजेक्ट वर्क के रिसर्च एक्टिविटी का पार्ट है, और जब कोई रिसर्चर होता है तो वो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, फील्ड में देखता है. कई बार सोचते हैं हम किस पे लिखते हैं, आप बता दीजिए. ऐसा नहीं होता. रिसर्च की एक्टिविटी में क्या होता है, आप रियल लाइफ सिचुएशन में देखते हैं. आप बहुत सारे विद्यार्थी हमारे इस समय कुछ काम भी कर रहे होते हैं, कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है. आप कुछ भी नहीं देखते तो न्यूज़पेपर की स्टोरी तो पढ़ते ही हैं. न्यूज़पेपर तो ज़रूर पढ़ना चाहिए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को. अभी जैसे हाल ही में टैरिफ की बात चर्चा में आई. ये टैरिफ क्या होता है?
ये टैरिफ लगा दिया तो इससे क्या असर पड़ेगा, हमारे एक्सपोर्ट कम होंगे, क्यों होंगे कम, या हमारे इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये टैरिफ तो अमेरिका वालों ने लगा है, हमारी कंट्री का ऐसे क्या लेना देना है, हमारे यहाँ की फैक्ट्री हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कई बार सुबह सुबह देखते हैं तो बहुत सारे मजदूर बाहर से आए हुए थे, वो अपना बैठे रहते हैं, भाई काम पर चाहिए, ये बाहर से क्यों आ गए हैं। अब ये आ गए तो इनकी भी कुछ समस्याएं होती हैं, क्या ये इनको रोज़गार नहीं मिलता है, यहाँ मिलता है तो इनको रहने सहने की क्या व्यवस्थाएं होती हैं। ये जब आ जाते हैं तो इनके घर का कामकाज कौन देखता है, बच्चों की देखभाली कौन देखता है। आजकल तो एनवायरनमेंट की बहुत बात होती है, भाई ये पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, क्यों होता है ये, क्या ट्रैफिक रियली बहुत ज़्यादा है, क्या क्या सोर्सेज हैं इसके। ऐसे विविध प्रश्न, जैसे कोई इंडस्ट्री प्रॉफिट में जा रही है, कोई घाटे में जा रही है, क्यों जा रही है। कोई भी आदमी अपना, कोई एंटरप्रेन्योर कोई अपना काम शुरू करना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। ऐसे विविध प्रश्न विद्यार्थियों के मस्तिष्क में उठते हैं। आजकल आपने देखा होगा, अभी मैं तो ज़्यादा नहीं जानता, पर ज़्यादातर लोग जो हैं ई पेमेंट करने लगे हैं। कहीं भी जाते हैं अपना मोबाइल निकाला, क्लिक किया और पेमेंट कर दिया। तो अब जो है मुद्रा की परिभाषा हमारी क्या है कि वो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो ये क्या नियर मनी है या मनी है, इससे क्या फ़ायदे नुकसान हैं, ऐसे प्रश्न बहुत सारे उठते हैं। इसमें सर मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ। जब आप अपना टॉपिक सिलेक्ट करें, जैसे सर ने ही बताया कि टैरिफ के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं कि टैरिफ का क्या इम्पैक्ट है, आप इसको आपने जो थ्योरी में पढ़ा है उससे रिलेट करें। जैसे आपका एक कोर्स है MEC 107, उसी पे आ रहा हूँ उसी पे इंटरनेशनल तो ऐसे पहले सबसे पहले क्या चीज़ बताई मैंने, सबसे पहले बात बताई कि क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। क्वेश्चनिंग माइंड कहाँ से होगा, either through newspaper or through observing the day-to-day events or discussing it with your supervisor, discussing with your peer groups। तो जब ये क्वेश्चनिंग why, what, how ऐसे क्वेश्चंस when आते हैं तो नेचुरली एक दिमाग में जाता है कि ये जो अभी तक हमने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, चाहे वो प्राइस थ्योरी पढ़ी हो, चाहे हमने माइक्रो पढ़ा हो, मैक्रो पढ़ा हो, क्या डज थ्योरी गिव्स एनी आंसर टू दीज क्वेश्चंस। इफ़ यस तो हम थ्योरी की तरफ देखते हैं, लेकिन कई बार हमने पढ़ा कुछ है लेकिन रियल लाइफ में कुछ दूसरी ही चीज़ होती है। तो ऐसा क्यों है कि थ्योरी कुछ कह रही है और रियल लाइफ हम देख रहे हैं कुछ अलग तरह का एक्सप्लेनेशन आ रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग। और तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। वंस द प्रॉब्लम हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, क्वेश्चन तो आपके माइंड में है ही सही ऑलरेडी। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये प्रोजेक्ट वर्क है, ये एमफिल और PhD का थीसिस नहीं है। इसके लिए आपको कितना है टाइम मिलेगा, बड़ा लिमिटेड टाइम है। आपको एक ही सेमेस्टर में 20 क्रेडिट के कोर्सेज करने हैं, यानी ये प्रोजेक्ट का वर्क तो एक है, बाकी और भी 16 क्रेडिट के या 14 क्रेडिट के कोर्सेज कर रहे हैं और 6 महीने का टाइम है, आप कैसे करेंगे। तो हमारा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी एमफिल या PhD वाला आपसे कतई नहीं है। और इसलिए हमारी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट का जो साइज़ है वो है 15,000 से 20,000 वर्ड्स, यानी कुल मिलाकर के 50 से 60 पेज का काम करना है। लेकिन वो काम ऐसे होना चाहिए कि आपकी क्रिटिकल एनालिटिकल कैपेबिलिटी रिफ्लेक्ट हो आपके प्रोजेक्ट वर्क में, क्योंकि आपके पास टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, थ्योरी है, क्वेश्चनिंग माइंड है, आपके क्वेश्चंस हैं। तो ये एक स्टोरी की तरह से नहीं बताना होता। जैसे कोई गांव का आदमी होता है, कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी, कोई बता देता है फलानी पार्टी जीतेगी, उसके पीछे कोई लॉजिक तो होती नहीं है, कुछ भी बता देते हैं जिसको जो पसंद है। तो ये एनालिसिस का काम इस तरीके से नहीं होता कि तुम्हारी मन मर्जी कुछ भी देने को। अब इसमें या तो आर्गुमेंट दें, लॉजिक दें कि भाई क्यों है ऐसा, या तो डेटा एम्पिरिकल एविडेंसेस के साथ बताएं, ये भी एक है। तो या कोई साइटेशंस दें कि भाई किसी दूसरे व्यक्ति ने, किसी बड़े एमिनेंट स्कॉलर ने ये बात कही, हम उसके आधार पर अपना आर्गुमेंट दे रहे हैं। तो दीज आर द 3 बेसिकली प्राइमरी थिंग्स, आइदर डेटा किसी आर्गुमेंट के, या लॉजिक, या तो कोई प्रॉपर ऑलरेडी रिसर्च का काम ऐसा हो चुका है तो उसको साइट कर सकते हैं कि इस आधार पर हम अपना ये आर्गुमेंट दे रहे हैं। तो ये मैंने बताया ऑब्जेक्टिव्स, आपके रिसर्च क्वेश्चंस की अलाइनमेंट होना चाहिए, मतलब उसी से रिलेटेड रिसर्च क्वेश्चंस हो। जब ये हो जाता है तो अगला क्वेश्चन आता है कि हम डेटा के सोर्सेज क्या होंगे,
डेटा माने यहाँ इंफॉर्मेशन से मेरा मतलब है, डेटा का मतलब केवल अंकों से ही नहीं है, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज डेटा फॉर आवर पर्पस. इट मे बी क्वांटिटेटिव इन नेचर, इट मे बी सम अदर फॉर्म्स ऑल्सो. अब डेटा का एक तो प्राइमरी सोर्स होता है. प्राइमरी सोर्स से मेरा मतलब है कि आप उस डेटा को थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेटा कलेक्शन, चाहे क्वेश्चनर के थ्रू, शेड्यूल के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ये मतलब कलेक्ट करें. तो प्राइमरी मतलब सेंसस होगा या तो सर्वे होगा. सेंसस तो होगा नहीं, क्योंकि सेंसस तो पूरे का करना पड़ता है, तो आपका सर्वे ही होगा. सर्वे में कुछ, अब कितना बड़ा साइज सर्वे हो, आपका प्रोजेक्ट वर्क एक छोटा सा काम है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन यूनिट 50 to 100 के बीच में कहीं हो सकता है. अब कई बार इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइमरी सोर्स का ही डेटा यूज़ करें, बहुत सारा हमारे पास सेकेंडरी सोर्स का डेटा भी अवेलेबल है. यानी ऑलरेडी गवर्नमेंट की डिफरेंट डेटा कंपाइलिंग एजेंसीज हैं जो एनवायरनमेंट पे, एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे, सर्विसेज पे, बैंकिंग पे, इंश्योरेंस पे, एनवायरनमेंट पे बहुत सारा डेटा कलेक्ट करती हैं. लेकिन वो डेटा एक तरीके से एक मैक्रो लेवल पर होता है. वो डेटा ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए एकदम से यूजफुल हो. उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, उस डेटा को अडॉप्ट करना पड़ता है आपको अपने पर्पस और अपने रिसर्च क्वेश्चंस के हिसाब से. तो ऐसी एक बहुत बड़ी टेबल हमने 2-3 पेज की टेबल अपनी प्रोजेक्ट गाइड में दी है, जिसमें हमने दिया है कि इस तरीके का डेटा ये एजेंसी कलेक्ट करती है और इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे अवेलेबल है. हमने CMI का भी इसमें जिक्र किया है. CMI भी डेटा कंपाइल करती है और रेगुलरली करती है हाउस होल्ड फैमिली से, तो वो डेटा भी आप एक्सेस कर सकते हैं. तो डेटा सेकेंडरी सोर्सेज का डेटा कहाँ कहाँ पर है वो हमारी इसमें मिल जाएगा. प्राइमरी सोर्स डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है ये भी डिटेल आपको प्रोजेक्ट वर्क में मिल जाएगा. वंस प्रोजेक्ट वर्क जब डेटा आपका हो गया, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, तो अब अगला स्थिति आती है कि इस डेटा को हम एनालिसिस कैसे करें. क्योंकि डेटा अपने में कोई रिसर्च नहीं होता, डेटा कर दिया, लेकिन डेटा से जो आप एनालिसिस करते हैं, जो रिजल्ट्स निकालते हैं, दैट इज ट्रू सेंस मीनिंगफुल रिसर्च. तो इस तरीके से डेटा को कैसे एनालाइज करें. डेटा कई तरीके का हो सकता है, यूनिवेरिएट हो सकता है, बाईवेरिएट हो सकता है, मल्टीवेरिएट हो सकता है. हो सकता है कि डेटा न हो, कुछ नैरेटिव्स भी हो सकते हैं. तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के डेटा को एनालाइज करने के लिए हमने एक टेबल यहाँ पर दी है. उस टेबल के तहत आप कौन सी डेटा टेक्निक्स यूज करनी है ये इसमें मिलेगा. समय की सीमा है, हम जल्दी ही एक अगला सत्र भी इस पे करेंगे, डेटा एनालिसिस टेक्निक्स पे और हाउ टू राइट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट. इसके साथ ही मैं अपना, चूँकि टाइम इज़ नॉट परमिटिंग मी, ऑल्दो लॉट ऑफ थिंग्स आई वांट टू डिस्कस इट, सो विद दिस थिंग I will stop here, Vijeta. Thank you so much, sir. You told us about so many important aspects of project work, how to do it, how to refer to project guide to extract, to identify about different aspects like data collection, data methodology. Like sir rightly said that time is limited. We are not able to cover all the aspects, but we will definitely come up with second part of the session where we will in detail talk about different data collection methods, data methodology, and how to evaluate, how to write results, etc., and how to finally compile a project report. So on that note, thank you so much. Hope this session was useful for you. Hope you were able to understand some basic aspects of project work, and we will continue. Thank you.